Here's a number. औरंगजेब के अत्याचार, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। पता नहीं आप लोगों को फील हुआ या नहीं, पर हम सब लोगों का ना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि मुगल्स दुष्ट थे और हिंदू मंदिरों को तोड़ते थे। ईमानदार इंटेलेक्चुअल्स ने मुगल्स के डिफेंस में न जाने कितने सबूत बनाए हैं। इनफैक्ट औरंगजेब टाइप्स लोग तो हिंदू मंदिरों को प्रोटेक्ट करते थे। Indians have a tendency to linger on. They are highly unscientific and believe in hearsay. The epitome of this weakness is their craze for Ramayan. European scholars and eminent historians have questioned the veracity of Ram. Politicians have even filed affidavits denying his existence. What we, the Desis, could never get is that Ram is just a fictitious figure. He never existed. Know who existed? Christ. His birth, such a historical milestone that even today we measure our years against it. Matthew, Mark, Luke and John, 4 good people have vouched for the veracity of Christ. Now that is true history. Not some sketchy fantasy written by an Indian hermit, but a grand Western story. Christ was born to a Virgin Mary, maybe in a cave or a manger, somewhere near or in Bethlehem. History. Matthew, Mark, Luke or John didn't know the year, the season, the month or even the day when Christ was born. Matthew does add that at the time of birth, there was a bright star in the eastern sky. So specific, right? Christ, on the other hand, has not one, but 2 very different genealogies. Matthew gives 41 generations from Abraham to Jesus. Luke gives 59 generations from God to Jesus. But hey, wait a second. Why was someone maintaining the genealogy of a carpenter? But hey, who cares? Jesus is solid history. Psych! That's the wrong number! बट आप ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 5 में लिखा है, काफिर को जहां देखो मार दो। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? ये तो इंसान अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा ना बाकियों से। कोई इंसान अगर इस पे अटैक करने के लिए आएगा तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा, वो अटैक क्यों करेगा? तो इंडियन फिलॉसफी में अटैक कहां है? The idea of the God only comes from the 3 Abrahamic religions. That there is the God somewhere, one authority. Nowhere else does it exist. Not at all in this culture. Whether you take Hindu way of life, Jains, Buddhists, Sikhs, nowhere there is a God. There is no God. When they see somebody that is evolved beyond what they think is normal, what they think is normal, then that person, they are saying, he is divinely endowed, something more than what we have. There is no the God. Because there is no the God, there is no incarnation. Avatar means a repeat performance. All the people whom you worship are people who walked this geography at one time. So no, in Telangana and Andhra Pradesh, there is history of Rama walking down to Sri Lanka and again walking up. People celebrate those places where he sat down, where he stayed for 2 days, where he did this and that, so many things. Unfortunately, their life occupied them with so many tragedies,
kidnappings and wars and stuff. But I'm saying there is proof that they walked this planet, they walked this country. And one of the epochal, pivotal events in the Mahabharata, in the Ramayana, is the construction of an artificial land bridge between southern India and the island of Lanka. And this has been considered to be a myth for the entirety of the British occupation of India. And even after independence, our mentally colonized historians have kept on insisting that this is a myth. And unfortunately for their narrative, it is a couple of American universities that have recently discovered and proved that this land bridge, which is known as Adam's Bridge for some reason, which is actually Ramasetu, they have demonstrated that this land bridge, this land connection is man-made. It is artificial. The stones are artificial over there. They have been artificially placed there. The sandbar may be natural, but what's sitting on top of it is not. This isn't just a simple sandbar. There's objects in here that haven't been eroded away. There are stones that have been brought from afar and set on top of our sandbar island chain. And when a team of geologists date the stones, the mystery deepens. The rocks on top of the sand actually predate the sand. So there's more to the story. Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. These results suggest the structure in the satellite image isn't natural, but built by humans. The ancient texts refer to a time 5,000 years ago. At this point in history, building such a long bridge would have been a superhuman achievement. So this has been proved by two different separate American universities, right? So it's clear that this so-called mythological tale has turned out to be true. And if this central tale of the Ramayana is true, it means that the Ramayana actually happened, right? And what these scientists discovered was that this man-made bridge is at least 7,000 years old. It may be older than that. We still don't know for sure. That Lord Krishna, he was a living human being. He's a historical figure. And we know that because we have rediscovered his lost capital city of Dwarka, which the Mahabharata says went under the ocean because of a colossal earthquake. डॉक्टर एस.आर. राव वैसे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, पर उन्हें विश्व प्रसिद्धि तब मिलती है जब भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, जिसे कि काल्पनिक माना जाता था, उसकी सत्यता को उन्होंने स्थापित किया। I took up the challenge to find out if really द्वारका existed. वो और उनकी टीम और गहरी खुदाई करना प्रारंभ करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद वहां पर एक नवीं शताब्दी का एक भव्य और पुराना मंदिर मिलता है। इस मंदिर में भगवान शिव, पार्वती माता, इंद्र, हाथी, घोड़े और अन्य प्रकार के देवी देवताओं की नक्काशियां थी। इसी मंदिर के किनारे से एक ईंटों से बनी हुई भूमिगत मार्ग के बारे में भी पता चलता है, जहां से उन्हें पुराने मिट्टी के बर्तन और कई धातुएं मिलती हैं। अपने रिसर्च के दौरान डॉक्टर राव को ऐसे कई प्रमाण मिले जिससे ये साबित हो रहा था कि ये पूरा का पूरा शहर समुद्र के द्वारा तबाह किया गया हो। But the whole question was where to look for this submerged city of Dwarka. I mean, in the sea you are not sure where to find him. पर डॉक्टर राव का ये सफर इतना आसान नहीं था। 1980s के समय इंडिया में मरीन आर्कियोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी, पर कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। तो डॉक्टर राव ने अपने मित्र मिस्टर गोखर की मदद से लोगों को मरीन आर्कियोलॉजी में ट्रेनिंग देना शुरू किया। डॉक्टर राव और उनकी टीम ने अपने काम को शुरू किया तो लगभग 1 सालों तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। डॉक्टर राव और उनकी टीम ने उम्मीद नहीं छोड़ी और धीरे धीरे उनकी टीम को लगातार प्रयास और अथक परिश्रम के बाद डॉक्टर राव को बड़े बड़े पत्थरों की शिलाएं मिलने लगी और हर शिला का वजन करीब 2 से 3 टन, इनकी चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर तक और लंबाई करीब 6 फीट तक।
इन पत्थरों को ऑब्जर्व करने के बाद डॉक्टर नायक, जो कि ओशन जियोलॉजिस्ट थे, उनका कहना था कि ये पत्थर की बड़ी शिलाएं किलों, मंदिरों, महलों के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं और ज़्यादा भारी होने के कारण समुद्र की लहरों द्वारा प्रभावित नहीं होती। डॉक्टर राव की टीम को फोर्ट वॉल यानी किलों की दीवारें मिलने लगी। एंट्रेंस वॉल, मकान, घर, शहर के अवशेष मिलने लगे और इनके ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता चला कि इन्हें बनाने का जो तकनीक इस्तेमाल हुआ है वह महाभारत में बताए हुए तकनीक से काफ़ी मिलता है। डॉक्टर राव को कई मुद्राएं भी मिली जिनके ऊपर 3 पशु, बुल, गोट और यूनिकॉर्न के साइन थे। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों, ऐसी ही मुद्रा का डिस्क्रिप्शन महाभारत में भी किया गया है कि महाभारत के समय में हर द्वारकावासी के पास ऐसी मुद्राएं होना आवश्यक था। For Rao, this was the missing link between the myth and the reality. For in the Mahabharata, this seal is described in the exact same way. Known as a mudra, it is an identification card carried by residents of Krishna's Dwarka. Actually, it says it is the duty of the guard to see that every citizen carries a mudra. इसीलिए उन्होंने खोजी हुई वस्तुओं का आधार बनाकर इस पूरे एरिया का कंटूर मैप और प्लान तैयार किया, जिससे पता चलता है कि ये पूरा एरिया कभी एक भव्य शहर हुआ करता था जिसमें कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग रहा करते थे। खुदाई के दौरान मिलने वाली हर वस्तु जैसे कि मिट्टी के बर्तन, धातु, मुद्राएं, इन सभी का कार्बन डेटिंग कराया गया, जिससे पता चलता है ये सारी वस्तुएं कम से कम 3500 से 5000 वर्ष पुरानी हैं, जो कि महाभारत के समय से मिलती हैं। द्वारका से जुड़े इन सारे तथ्यों को एक पुस्तक द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका। Present findings corroborate the description of the city of Dwarka as given in the Mahabharata, that it was a Varidurga, that is, a fortress in water. The artist's impression based on the findings gives a clear picture as to how Dwarka looked like. Now that the existence of the ancient city of Dwarka in 1500 BC and its submergence as stated in the Mahabharata have been proved. And we have discovered it exactly where this ancient text said it would be. So he is a historical figure. His capital city has been rediscovered. He was not some supernatural, mythical figure. He was a living, breathing human being, one of the greatest Indians, one of the greatest humans ever born. He was a leader. He orchestrated the events that took place during his lifetime. He directed the course of the Mahabharata war, and he brought out the best possible result for India. In the north, we were protected by the Himalayan ranges. In the south, by the Indian Ocean. So this is Himalaya. The Indian Ocean that we call today as Indian Ocean, at that time was called as Hindu Sagara. This is why we took the identity, he and do, Hindu. Hindu is not a religion, not a belief system, not a God-oriented thing, it is a geographical identity. भारतीय और हिंदू दोनों एक ही शब्द के दो रूप हैं। भारतीय शब्द भारत का भौगोलिक प्रतीक है, इसलिए हिंदू और भारतीय दोनों में कोई अंतर नहीं। जो हिंदू विरोधी है वह राष्ट्र विरोधी है।
gon' bend the road. No cares and nobody listening to the chin, don't get the same, gonna make me fed up. Fed up.